Hello everyone, let's discuss our mock test number 2 for OPSC Prelims 2024। तो आमे जो OPSC Prelim 2024 को टार्गेट करी हमर रिवीजन सीरीज स्टार्ट करचंदी। तो आज आमे हमर वीडियो रे देखिबा जे mock test number 2 जो थरे मु आर्ट एंड कल्चर रो 35 टा क्वेश्चन को इंक्लूड करची। तो जदि आपण मानु मोर इनिशिएटिव भल लागुताय ताले आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, वीडियो को लाइक कर नियंतु एवं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपण WhatsApp ग्रुप बा टेलीग्राम ग्रुप रे शेयर कर नियंतु। बर्तमान आम स्टार्ट करें आज आम मॉक टेस्ट नंबर 2 जो थे आम टॉपिक अच्छी आज आर्ट एंड कल्चर ऊपर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पर्यूषण पर्व। पर्यूषण पर्व रिगार्डिंग के स्टेटमेंट देछि आम कंसीडर करबा और से हमर कोटा करेक्ट अछि क्वेश्चन रे पचारछि। तो देखिबा हमर कोन कोन स्टेटमेंट अछि। पर्यूषण पर्व इज ए सिग्निफिकेंट फेस्टिवल इन बुद्धिज्म सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। पर्यूषण पर्व होछि गोटे बुद्धिज्म रो पर्व जोडा कि ऑल ओवर इंडिया रे पालन करा जाउची। इट इन्वॉल्व्स फास्टिंग, पेनेंस, मेडिटेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन एमिंग फॉर सोल प्यूरिफिकेशन एंड भाइंग टू एवॉइड फ्यूचर ट्रांसजेनरेशन। तो जदि आमे देखिबा पर्यूषण पर्व कथा, पर्यूषण पर्व बुद्धिज्म रो गोटे फेस्टिवल नाही। तो एटा होची हमर गोटे फेस्टिवल ऑफ जैनिज्म। तो एठी स्टेटमेंट 1 कोन अछि रॉन्ग अछि, स्टेटमेंट 2 टा करेक्ट अछि ना। एथरे फास्टिंग, मेडिटेशन, सेल्फ रियलाइजेशन और सोल प्यूरिफिकेशन पे कोन कर रो विधान रहिछि। तो पर्यूषण पर्व होछि गोटे सिग्निफिकेंट फेस्टिवल ऑफ जैनिज्म जोडा हमरो बोथ दिगंबर सेक्ट और श्वेतांबर कम्युनिटी माने कोन करचंदी पालन करचंदी। आर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस कथा जदि देखिबा पर्यूषण पर्व इंस्पायर करछि इंडिविजुअल माननकु टू कल्टिवेट वर्च्यू क्वालिटीज। इट इन्वॉल्व्स एथरे कोन इन्वॉल्व्स फास्टिंग, मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन एमिंग फॉर सोल प्यूरिफिकेशन आ सब ए सब एथरे एड अछि। जदि हमें पर्यूषण रो 5टा ड्यूटी कथा देखिबा, पर्यूषण रो 5टा ड्यूटी रे इंक्लूड अछि कोन ना संवत्सरी। संवत्सरी मींस फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन। नेक्स्ट हला केशलोचन। केशलोचन मींस इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट हला प्रतिकारम। प्रतिकारम मींस सीकिंग forgiveness for past wanderings। और नेक्स्ट हला पेनेंस। पेनेंस मींस कमिटमेंट टू स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड apology फॉर पास्ट मिस्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोजनाकोंडा। बोजनाकोंडा विषय रे किछि स्टेटमेंट अछि ताको हमें कंसीडर करबा और सेति पचाछि को स्टेटमेंट गुडा को करेक्ट पचाछि। तो देखो स्टेटमेंट कौन। बोजनाकोंडा इज ए सेंचुरीज ओल्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट इन कर्नाटका। इट शोज एलिमेंट्स ऑफ ऑल द 3 बुद्धिस्ट फेजेस। द साइट इज फेमस फॉर मेनी stupas, rock cut caves, brick built edifices and yearly historic pottery। तो एथरु हमर कोटा करेक्ट अछि देखिबा। बोजनाकोंडा कथा जदि आमे कहबा, बोजनाकोंडा होची गोटे सेंचुरीज ओल्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट बट एटा कर्नाटक रे नाही। एटा कोठी अछि ना ये अछि हमरो आंध्र प्रदेश रे अछि एट शंकरम नियर विशाखापट्टनम। तो एट स्टेटमेंट 1 कोन हेला हमरो रॉन्ग हेला। नेक्स्ट देला इट शोस एलिमेंट्स ऑफ ऑल 3 बुद्धिस्ट फेज। हमरो ये तीनटा जगह बुद्धिस्ट फेज को शो करूची। तीनटा जगह बुद्धिस्ट फेज हमरो कोन कोन ना फर्स्ट हेला कोन हमरो थेरावड़ा फेज, महायान फेज आउ वज्रायन फेज। तो ए तीनटा जगह फेज को ये बिलोंग करची। एटा स्टेटमेंट ठीक अछि। और ए साइड रे हमरो मेन बहुत गुडा स्तूप, रॉक कट केव, ब्रिक बिल्ट एडिफिक्स ए सब देखिबा को मिलुची। तो एटा मध्ये ठीक अछि। तो एठरे करेक्ट आंसर कोन हबो ना दीटा ओनली दीटा स्टेटमेंट एठे ठीक अछि। करेक्ट आंसर होची ओनली बी। देखो तार जदि हम एक्सप्लेनेशन कथा देखिबा, ये होची गोटे ओल्ड सेंचुरी ओल्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट जोडा अछि शंकरम नियर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश रे अछि। आ एटा एथरे रॉक कर्व्ड स्ट्रक्चर देखा जाउची, रॉक कट मोनोलिथिक स्तूप मध्ये देखा जाउची। आ ये तीनटा जगह बुद्धिस्ट फेज को बिलोंग करची। गोटेला थेरावड़ा। थेरावड़ा जेतळ बुद्ध कोन थिले कंसीडर एज ए टीचर थिले सेटा को हमें थेरावड़ा फेज कहउचंदी। महायान फेज केतळ ना बुद्धिज्म वाज मोर डिवोशनल जेतळ हला ताको हमें महायान फेज कहउचंदी। आ वज्रायन फेज होची बुद्धिस्ट ट्रेडिशन वाज मोर प्रैक्टिस्ड एज तंत्र एंड हिस्टोरिक फॉर्म ताको हमें वज्रायन फेज बोली कहउचंदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा consider the following statement regarding Phanigiri artifacts Phanigiri artifact regarding रे हमर केतरा स्टेटमेंट अछि ताको हमें कंसीडर करबा और से पचार एठरे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोटा अछि हमें क्वेश्चन पढ़ला बेले भलो भाबे पढिया पड़ियो ना ओपीएससी एथरे ही हमर माने फ्रेम करथाउ छि एमती का क्वेश्चन जे पिला माने करेक्ट इनकरेक्ट न देखि के आंसर दे दियंती फଳରେ क्वेश्चन रॉन्ग हे जाय तो एठी हमर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पचार हमें दीटा मधुर कोटा इनकरेक्ट अछि देखिबा तो हमर स्टेटमेंट अछि कोन Phanigiri often referred as the hillock of snakehood is a small village located in Madhya Pradesh तो ए जो फनीगिरी आर्टिफैक्ट अछि हमरो एटा मध्य प्रदेश रे नाही एटा अछि कोठी हमरो हैदराबाद तेलंगाना रे अछि Phanigiri provides evidence of deification of Buddha and transition towards canonization of rituals of Buddhist practices तो ए स्टेटमेंट एठी कोन अछि ठीक अछि तो आमु से पचार थिला जे एठी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोटा अछि तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमरो ऑप्शन 1 टा इनकरेक्ट अछि तो आंसर हबो कोटा ओनली 1 ओनली दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर देखन तार एक्सप्लेनेशन देखंदु फनीगिरी बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट डिस्कवर हेतिला केबे 1942 मसिया रे डेटिंग फ्रॉम 200 बीसी रु 400 बीसी पीरियड को ये बिलोंग करछि currently showcased at the न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम आर्ट रे एटा वर्तमान अछि न्यूयॉर्क रो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम आर्ट रे इज एन एग्जीबिशन कॉल्ड द ट्री एंड सर्पेंट बोलिया को ना रखा जायछि फनीगिरी often referred to as the hillock of snakewood a small village approximately 150 किमी from Hyderabad with significant historical and spiritual significance of Buddhism हमर देखिबा फनीगिरी जो आर्टिफैक्ट अछि आर कोन सब फाइंडिंग्स अछि ये होचे हमर फनीगिरी आर्टिफैक्ट रो इमेज फनीगिरी आर द सेट ऑफ तोरणस व्हिच आर स्टोन गेटवेज एंड वन ऑफ दिस तोरणस डिस्प्लेस बोथ महायान एंड हिनायन स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट थॉट सजेस्टिंग कोएक्जिस्टेंस डिस्पाइट फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस फनीगिरी प्रोवाइड करछि कोन एविडेंस ऑफ डेफिकेशन ऑफ बुद्ध and transition towards a colonization of ritual in Buddhist practices. Artifact of this site include करछि limestone carving of Buddha bearing what appears to be Roman toga are considered highly important and now part of exhibition in New York. तो एटा होछि हमरो फनीगिरी आर्टिफैक्ट जोटा हमरो बुद्धिस्ट साइट गोटे तेलंगाना रो नेक्स्ट पॉइंट हला द प्लेसेस कपिलवस्तु एंड लुम्बिनी आर लोकेटेड कपिलवस्तु और लुम्बिनी ए दुटा प्लेस हमर कोठी अछि ए दुटा अछि हमर नेपाल रे अछि तो कपिलवस्तु अछि सदर्न नेपाल रे आ ए जो दुटा जाका अछि लुम्बिनी गोटे होछि बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट ऑफ नेपाल आ एटा हमर बुद्धंकर बर्थ प्लेस नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साक्ष्यस साक्ष्य मानक विषय रे किछि स्टेटमेंट देछि आ एटा हमर करेक्ट स्टेटमेंट कोटा पचारला The Shakyas ruled Kapilavastu after Buddha's परिनिर्वाण ठीक अछि एटा साक्ष्य माने कपिलवस्तु रे बुद्धंक परिनिर्वाण परे रूल करथले they flew to different part of greater Magadha and to far flung places like Gandhara and Burma एटा मध्ये ठीक अछि से माने ग्रेटर मगध ठू माने अलगा हे जाइथिले लाइक गांधारा और बर्मा पटे जाइथिले they were granted a status comparable to that of the विराजवा प्रीस्ट्स एटा मध्ये ठीक अछि तो एठी सबु जाको स्टेटमेंट करेक्ट अछि ऑल थ्री आर करेक्ट साक्ष्य हु रूल्ड कपिलवस्तु आफ्टर बुद्धस परिनिर्वाण डिड नॉट हैव एन आर्मी एंड मेनी वेर मेस्केर्ड एंड सगरहवा इवेंचुअली द रिमेनिंग साक्ष्य फ्lew to different part of greater Magadha and to far flung places like Gandhara modern day of Afghanistan and Myanmar many also went to the Kathmandu Valley and were granted the status comparable to that of Vajracharya priests, but they were not permitted to practice as priesthood outside their families. Next question. Consider the following statement regarding Dholavira. Dholavira विषय रे हमरो किछि स्टेटमेंट अछि आमे ताको कंसीडर करबा और करेक्ट स्टेटमेंट पचारला करेक्ट स्टेटमेंट एथरु कोटा कोटा अछि देखिबा तो स्टेटमेंट 1 देला हियर
the walls were made of sandstone or limestone instead of mud bricks in many other Harappan sites रे तो ए स्टेटमेंट टा करेक्ट अछि ना एठी हमर वॉल गुडा को कोन अछि सैंडस्टोन और लाइमस्टोन रे तयारी हेछि it was a hub of manufacturing jewelry made of shells and semi precious stones एटा मध्ये ठीक अछि एठी हमर ज्वेलरी तयारी होतला सेल रे और अदर प्रीशियस स्टोन रे लाइक आगेटाइट इत्यादि next है extensive moral remains of human have been discovered at ढोलावीरा तो ढोलावीरा रे हमर मोर्टाल रिमेन किछि मध्ये मिलिनी ह्यूमन रो तो ए स्टेटमेंट एठी हमर रॉन्ग अछि एठी दीटा स्टेटमेंट ठीक अछि आंसर हबो ओनली 2 देखो तार एक्सप्लेनेशन द साइट हैज ए फोर्टिफाइड सिटाडेल गोटे मिडिल टाउन अछि आ गोटे लोअर टाउन अछि जार वॉल गुडा को सैंडस्टोन लाइमस्टोन रे तयारी हेछि अन्य हरपा साइट रे जेमि मड ब्रिक रे तयारी होतला तो एठी सैंडस्टोन आ लाइमस्टोन रे तयारी हेछि आर्कियोलॉजिस्ट्स साइट्स ए कास्केडिंग सेवरल वाटर रिजर्वर एठी मिलिछि आउटर फोर्टिफिकेशन टू मल्टीपर्पज ग्राउंड one for used for festivals or one is marketplace 9 gates with unique designs and funerary architecture featuring tumulus hemispherical structure like buddha stupas some of the unique features of dholavira site आ एठी हमरो अदर आईबीसी साइट बेरी ह्यूमन मोर्टाल रो रिमेन एठी डिस्कवर हेइनी आ एटा होची गोटे हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरी जोठी रे हमरो सेल सेमी प्रीशियस स्टोन लाइक आगेट एथरे यूज होची आ यूज टू एक्सपोर्ट टिम्बर नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following statement regarding Gupta art and architecture Gupta art and architecture ऊपर हम कितरा स्टेटमेंट अछि सेथरु कोडा करेक्ट पचारला तो स्टेटमेंट 1 हला बोथ नागेरा एंड द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट इन्वॉल्वड ड्यूरिंग दिस पीरियड ठीक अछि एटा ना हमर गुप्ता आर्ट आर्किटेक्चर रे बोथ नागरा स्टाइल और द्राविडियन स्टाइल देखिबा को मिले मेटागुलारी हैड मेड ए वंडरफुल प्रोग्रेस ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड तो ए स्टेटमेंट भी एठी ठीक अछि ऑप्शन 3 दला इट हैज द एक्सटेंसिव इन्फ्लुएंस ऑफ गांधार स्टाइल तो ए स्टेटमेंट एठी भूल अछि ये गांधार स्टाइल रे इन्फ्लुएंस नाही ये को स्टाइल रे अछि नागरा स्टाइल आउ द्राविडियन स्टाइल रे तो स्टेटमेंट 3 अछि इनकरेक्ट दीटा स्टेटमेंट एठी ठीक अछि ओनली 2 आंसर हबो ऑप्शन बी हैला करेक्ट आंसर देखो बोथ नागरा एंड द्राविडियन स्टाइल आर्ट इन्वॉल्वड ड्यूरिंग द दिस पीरियड but most the architecture of this period have been lost due to foreign invention like that of Hunas हुण मानक foreign invention द्वारा प्रायतः architecture lost हो जाइछि the temple at Devgad near Jhansi and sculptures in the temple of Gharwara near Allahabad remain important specimen of Gupta art there was no influence of Gandhara style but the beautiful statues of standing Buddha at Mathura reveals a little Greek style Metagulari had also made wonderful progress during the Gupta period. Craftsmen were efficient in art of casting metal, statues and pillars. The Delhi iron pillar of Gupta period, still free from rust, though completely exposed to the sun and rain so many centuries. Next question है consider the following statement regarding North Indian temple site North India रो temple site ऊपरे हमर किछरा स्टेटमेंट अछि ताकू कंसीडर करबा एथरु से परचाला करेक्ट कोटा बोली तो स्टेटमेंट 1 दला in North India it is common for an entire temple to be built on a stone platform with steps leading up to it कोन कहला ना नॉर्थ इंडिया रे जो टेम्पल अछि एडा कॉमन जे से गोटे सिंगल स्टोन रे तयारी हेतिबो built on a stone platform with step leading up it आउ सेतरे पाहाच थिबो तो एटा ठीक अछि करेक्ट आंसर हो जेटा स्टेटमेंट ठीक अछि it does usually have elaborated boundary wall or gateways से पचला एथिरे elaborated boundary wall और gateway अछि किंतु ए टेम्पल रे हमरो बाउंड्री किछि नाही तो स्टेटमेंट 2 होछि रॉन्ग The गर्भगृह is always located directly under the Talas Tower. Talas रो टावर रो तळे गर्भगृह अछि तो एटा ठीक अछि तो एठी हमरो दीटा स्टेटमेंट ठीक अछि ओनली 2 होबा आंसर एक्सप्लेनेशन देखंतु द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बिकम पॉपुलर इन नॉर्दर्न इंडिया इज नोन एज नागरा स्टाइल तो नॉर्दर्न इंडिया रो टेम्पल स्टाइल होछि नागरा स्टाइल
in North India it is common for an entire temple to be built on stone platform with steps leading up it. Further, unlike the South India, it does not usually have elaborated boundary wall or gateway. So it is a statement to the light, it usually have elaborated boundary wall gateway. तो এটা हमरो साउथ इंडिया रो टेम्पल रे ए फीचर टा देखा जाउची, तो এটা नॉर्थ इंडिया रे देखा जाउनी. While the earliest temple had just one tower or shikhara, later temple had several. The Garbhagriha is always located directly under the tallest tower. Next question. Consider the following statement regarding the temple architecture of Kashmir. Kashmir रो temple architecture विषय किछि statement अछि, हमको correct कोटा बाछिबा पड़िबो. तो statement 1 देला Kashmir's proximity to prominent Gandhara site lent the region a strong Gandhara influence. तो एटा काश्मीर हमर अछि कोठी नॉर्थ इंडिया रे, तो एठी हमर गांधारा स्टाइल रो इन्फ्लुएंस अछि, तो एटा ठीक अछि. The Karkota period of Kashmir is most significant in term of architecture. एटा मध्ये ठीक अछि. There was a tradition of water tank attached to the shrine. एटा मध्ये ठीक अछि. देखो एक्सप्लेनेशन एटे all three is correct. Option C correct हबो. Kashmir's proximity to prominent Gandhara site such as Takshashila, Peshawar and the northwest frontier lent the region a strong Gandhara influence by 5th century. Karkota period of Kashmir is the most significant term of architecture. One of the most important temple in Pandarnath built during the 8th and 9th century. In keeping with the tradition of water tank attached to the shrine, this temple is built on the plinth built in the middle of tank. Although there are evidences of both Hindu and Buddhist following in Kashmir, this temple is Hindu, one possibly dedicated to Shiva. The architecture of this temple is in keeping with the age-old Kashmiri tradition wooden buildings. Next question. Consider the following statement regarding Vesara School of Architecture. Vesara School of Architecture विषय किछि स्टेटमेंट देला, हमको बाछिबा पड़ियो करेक्ट स्टेटमेंट कोटा. Statement 1 देला in Vesara School of Architecture the pillars, doorways and ceilings were decorated with intricate carvings. तो ए स्टेटमेंट एठी ठीक अछि. The influence of Nagara style is in intricate carving and sculptures design of Vimana and step of terraced shikhara of Vesara temple. So the influence of Dravidian style is seen in curvilinear shikhara and square base of Vesara temples. तो एठी हमर अछि जो influence of Nagara style अछि, एठी Nagara style होबनी, influence of Dravidian style होबो एटा. एठी जो इन्फ्लुएंस ऑफ द्राविड़ स्टाइल अछि, एटा द्राविड़ स्टाइल न कि एटा हबो नागरा स्टाइल. तो ए दिटा स्टेटमेंट टा कोन हो जाईची, रिवर्स हो जाईची. तो एठी हमर स्टेटमेंट 2 रॉन्ग अछि, स्टेटमेंट 3 रॉन्ग अछि. स्टेटमेंट 1 ठीक अछि, आंसर होला ओनली 1. एक्सप्लेनेशन देखंतु. Also known as Karnataka School of Architecture, it was conceptualized under the Chalukya rulers in the mid-century AD. It combined feature of both Nagara school and Dravidian school. माने कॉम्बिनेशन ऑफ नागरा और द्राविडियन स्कूल का रहला ना बेसारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर टा बोथ नागरा स्कूल और द्राविडियन स्कूल को नेकी गठित होईची. आर सम फीचर देखिबा. एम्फासाइजेशन विमान और मंडप, ये एथरे विमान अछि और मंडप अछि. ओपन एम्बुलेटरी पास गेटवे अछि. पिलर, डोरवे और सेलिंग वेयर डेकोरेटेड इन इंट्रिकेट कार्विंग अछि एथरे. और इन्फ्लुएंस ऑफ नागरा स्टाइल इज कर्विलिनियर शिखर एंड स्क्वायर बेस वेसारा टेम्पल एडा आछि. और द्राविड़ स्टाइल रो इन्फ्लुएंस रु जार स्कल्पचर डिजाइन और विमान स्टेप और टेरेस्ड शिखर बेसारा टेम्पल अछि. आ ए टेम्पल रे एग्जांपल हैला दोदाबासापा टेम्पल जोडा अछि दाम्बाल रे, लादाकान टेम्पल जोडा अछि आईहोल्ड रे, टेम्पल एट बादामी. ए सब होचारो हमरो बेसारा स्टाइल आर्किटेक्चर रो टेम्पल रो एग्जांपल. नेक्स्ट हैला in India the guideline for declaring a language as classical language are. India रे हमरो
गोटे लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करिवार गाइडलाइन कोन अछि ता विषय रे किछ स्टेटमेंट देला हमहु सेथु करेक्ट स्टेटमेंट बाछिवार अछि। तो स्टेटमेंट 1 देला हाई एंटीक्वालिटी ऑफ इट्स ईयरली टेक्स्ट recorded history over the period of 1500 ରୁ 2000 ईयर तार जो टेक्स्ट बा रेकॉर्ड हिस्ट्री केते वर्ष पुराना हेतिबो 1500 ରୁ 2000 वर्ष पुराना हेतिबा दरकार। तो ए स्टेटमेंटटा ठीक अछि। द लिटरेरी एडिशन मस्ट बी ओरिजिनल एंड नॉट borrowed फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी। जो लिटरेरी ट्रेडिशन डा अछि से प्रकृत ओरिजिनल हेतिबो आउ अन्य कोनोसी लैंग्वेज बा स्पीच बा कम्युनिटी रू डिराइव हे नथिबो बोरो हे नथिबो। ए स्टेटमेंटटा भी ठीक अछि। There should not be any discontinuity between the classical language and its later forms in it the offshoot। तो एठी there should not be any discontinuity अछि तो एठी not हबनी there should be any discontinuity between the classical language हवा आंसर। तो एठी हमरो दीटा स्टेटमेंट करेक्ट अछि only 2 हवा आंसर ऑप्शन बी हला करेक्ट आंसर। देखो गाइडलाइन कोन अछि हमरो एठी एक्सप्लेनेशन रे देखिबा हाई क्वालिटी एंटीक्वालिटी थिबो ईयरली टेक्स्ट रेकॉर्ड हिस्ट्री ओवर 1500 2000 थिबो ए बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर और टेक्स्ट व्हिच कंसीडरेड वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशंस ऑफ स्पीकर। द लिटरेरी ट्रेडिशन बी ओरिजिनल नॉट borrowed फ्रॉम अनदर स्पीच। द क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न there may also be discontinuity between the classical language and its later form of the offshoot। Next question, Bhasha Sannman Award are given by the Sahitya Academy. Which of the following statement best describe the Bhasha Sannman Award? आमर साहित्य एकेडमी द्वारा भाषा सम्मान अवार्ड दिया जाउची। तो आमर भाषा सम्मान अवार्ड्स ऊपर किछि स्टेटमेंट देला हमहु सेथरु से स्टेटमेंटटा कोन अछि माने ठीक देला को स्टेटमेंटटा निम्नलिखित मध्यरु को स्टेटमेंटटा बेस्ट डिस्क्राइब करछि भाषा सम्मान अवार्ड को। ऑप्शन ए हला इट रिकॉग्नाइजेस स्कॉलर्स हु हैव डन valuable work in the field of tribal language। Option B hela it is considered on persons in recognition of their substantial contribution in the field of Persian, Arabic, Pali and Prakrit language। Option C hela it recognizes scholars who have done valuable work in field of classical and medieval literature। Option D hela it recognizes young writers under the age of 35। तार करेक्ट आंसर होची it recognizes scholars who have done valuable work in field of classical and medieval literature। Next question, the word yavanos mentioned in detail in Sangama literature refers to। Sangama literature रे word yavana अछि यवन रो डिटेल कोन माने रेफर को ए यवन वर्ड टा कागु रेफर करछि। ऑप्शन देला horse chariots that were used for Ashwamedha sacrifices, elaborated religious arrangements made by kings, foreign conquests that lead to local cultural assimilations, some Greek kingdoms। तो ए जो वाटा रहला संगम लिटरेचर रे यवन ये कागु डिस्क्राइब करछि ना सम ग्रीक किंगडम को ये रेफर करछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement regarding prehistoric painting। prehistoric paint विषय रे हमर किछि स्टेटमेंट अछि एठी हमहु पचारछि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोटा भूल को स्टेटमेंट पचारला। तो स्टेटमेंट 1 हला there are evidences of lower paleolithic people producing arts। ऑप्शन बी दला स्टेटमेंट 2 दला symbols do not form part of prehistoric paintings। स्टेटमेंट 3 दला hunting scenes predominated in Mesolithic paintings। तो आमे जदि प्रीहिस्टोरिक रो पेंटिंग कथा देखिबा हमर से पेंटिंग रे हंटिंग रो सीन को देखा जायथिला। तो स्टेटमेंट 3 टा ठीक अछि। सिंबल डू नॉट पार्ट ऑफ प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग, प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग रे सिंबल इंक्लूड थिला तो एटी डू नॉट फॉर्म देछि। तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग अछि। देयर आर एविडेंसेस ऑफ लोअर पैलियोलिथिक पीपल प्रोड्यूसिंग आर्ट। हमर लोअर पैलियोलिथिक पीपल माने ओकर आर्ट विषय रे एपर्यंत कोनोस एविडेंस मिलिनी। तो एटा मध्ये भूल अछि। एटी गोटे स्टेटमेंट ठीक अछि दीटा भूल अछि। तो से पचाथिला इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोठा तो हमर आंसर हबो ओनली 2 दीटा स्टेटमेंट एटी रॉन्ग अछि।
Next question. At places like Tekkalkutta in Karnataka and Andhra Pradesh, rock paintings from Neolithic age are often found. Which of the following can be appropriated region for it? ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକା ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ନ୍ୟୁଲିଥିକ ଏଜ ର ପେଣ୍ଟିଂ ମିଳିଛି ତ ତାର ରିଜନ କଣ ପଚାରିଲା ଅପସନ ଦେଲା paintings existed in other region too but these regions were one of the most exhibited regions which made it easier to find rock paintings. Option B ହେଲା there were lack of deep caves so rock paintings become abundant. Option C ହେଲା granite rocks found in Karnataka and Andhra Pradesh are suitable for rock paintings. Option D ଦେଲା none of these above. ତାର correct answer ହେଉଛି granite rocks found in Karnataka and Andhra Pradesh are suitable for rock paintings. ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ନ୍ୟୁଲିଥିକ ଏଜ ର ରକ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡାକ ଏକ୍ସିବିସନ ରୁ ମିଳିଛି. नेक्स्ट क्वेश्चन है जुगलबंदी इज वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन इन हमर जुगलबंदी बंदी हमर को डांस फॉर्म सहित एसोसिएटेड अछि पचारला ऑप्शन अछि सतरिया मणिपुर कथक आ कथकाली तार करेक्ट आंसर होछि हमर जुगलबंदी होछि गोटे मेन अट्रैक्शन ऑफ कथकर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नाट्य शास्त्र इज ए नोटेबल एंशिएंट treatise influencing dance, music and literary tradition in India. It is notably for the Asiatic Rasa theory. The Rasa theory states that तो नाट्य शास्त्र रो रासा theory कौन कहूची ऑप्शन देला परफॉर्म ऑफ आर्ट्स इन इंटेंडेड प्यूरली फॉर एंटरटेनमेंट. Pleasure and happiness are the foundation of human's life. The primary goal of ragas in music is to give a natural flavor, one that appeals to all creatures and not only human beings. Performance of arts is a tool to raise individual consciousness for spiritual upliftment. तो आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी परफॉर्मेंस ऑफ आर्ट्स इज ए टूल टू रेज इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट. नेक्स्ट देला कंसीडर द फॉलोइंग पेयर केतरा पेयर अछि हमें ताको कंसीडर करबा से पचाछि को पेयरटा करेक्टली मैच करूछि. होजागिरी डांस को कम्युनिटी को रिलेट करछि ना रियांग कम्युनिटी. भुज डांस चमका कम्युनिटी. चेराउ डांस लुसाई कम्युनिटी. तो से पचारला ए तीनटा जो पेयर देला ए तीनटा पेयर रो कोटा ठीक अछि तो एठी तीनटा जाको पेयर ठीक अछि. आंसर होछि 1 2 3. होजागिरी डांस रियांग कम्युनिटी को बिलोंग करछि. बिजू डांस चमका कम्युनिटी को बिलोंग करछि. चेराउ डांस लुसाई कम्युनिटी को बिलोंग करछि. सिंधी वांगला डांस गारो कम्युनिटी को बिलोंग करछि. नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतनाट्यम डांस इज नोन एज इकाहार्य व्हिच implies. ऑप्शन है भारतनाट्यम leans heavily on the अभिनय or mime aspect of dance. Bharatanatyam is accompanied by musical syllables with a few lines of sahitya. Bharatanatyam performance always ends with a tilana. Bharatanatyam dancer takes on many roles in a single performance. तो आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी हला करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेमी क्लासिकल म्यूजिक फ्रॉम ठुमरी. ठुमरी रो म्यूजिक विषय रे हमर किछि स्टेटमेंट अछि सेथुर हमर करेक्ट स्टेटमेंट कोडा पचारला. ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 हला ठुमरी इज बेस्ड ऑन द रोमांटिक डिवोशनल लिटरेचर इंस्पायर्ड बाय भक्ति मूवमेंट. तो ए स्टेटमेंट ठीक अछि. ए ठुमरी सॉन्ग डा हमर म्यूजिक डा हमर कोड आछि भक्ति मूवमेंट रो इंस्पायर हेछि आ ये ओटे होछि रोमांटिक डिवोशनल लिटरेचर. द लिरिक्स आर यूजुअली ए डायलेक्ट ऑफ हिंदी कॉल्ड ब्रिज भाषा एटा मध्ये ठीक अछि. नेक्स्ट हला ठुमरी इज वन ऑफ द
डिविजन्स ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक ठुमरी हमर कार्नाटिक म्यूजिक रो डिविजन नै ठुमरी होची गोटे कार ना क्लासिकल म्यूजिक रो डिविजन नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कठपुतली नाच विषय रे हमरो किछटा स्टेटमेंट देला आमे सेतरु करेक्ट कोडा देखिबा इट इज द स्ट्रिंग पपेट ऑफ राजस्थान कठपुतली इट इज द स्ट्रिंग पपेट्स ऑफ राजस्थान एटा ठीक अछि carved from single piece of wood these puppets are like large dolls that are colorfully dressed एटा हमर गोटे सिंगल वुड रु तयारी आ हमर कलरफुली ड्रेस माने पिन्थिबे बड़ बड़ कंढे गुडाक एटा भी ठीक अछि these puppets wear long trailing skirts and do not have leg एमानकर माने एमाने बड़ बड़ ड्रेस पिन्थिथांदी आ तांकर गोडो नाही ठीक अछि oval faces large eyes arched eyebrows and large lip are some of the facial features of these puppets एटा मध्ये ठीक अछि तो कठपुतली विषय रे चारटा जाक स्टेटमेंट ठीक अछि तो आंसर हबो ऑल फोर ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट द earliest reference to the art of puppetry is found in earliest reference of art of puppetry हमरो कोठ देखिबा मिलिछि ना शिलापादी करम रु देखिबा मिलिछि ऑप्शन डी इज करेक्ट जोड़ा हमर फर्स्ट सेंचुरी और सेकंड सेंचुरी बीसी रे लेखा जायतिला नेक्स्ट हला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन पपेट्री विषय रे हमर किछटा स्टेटमेंट अछि puppets were present at exhibition sites at Harappa and Mohenjo-daro एटा हमर पचारला कोन करेक्ट पचारछि तो puppets were present at exhibition site of Harappa and Mohenjo-daro एटा हमर ठीक अछि Bomalatam and Yampuri is the example of string puppet तो Bomalatam और Yampuri string puppet रो हमर एग्जांपल नै एटा को puppet रो एग्जांपल ना rod puppet रो नेक्स्ट है गोम्बायाटा हैज इन्फ्लुएंस ऑफ तक्षांगना थिएटर ऑफ कर्नाटका तो एटा मध्ये एटा ठीक अछि दीटा स्टेटमेंट एटा ठीक हला आंसर हबो ओनली 2 नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स हमरो पपेट्री और स्टेट को पपेट्रीडा को स्टेट रो देछि केतरा पेयर देछि सेथुर हमें इनकरेक्टली पपेट कोडा मैच अछि देखिबा कोडा हमरो भूल पेयर अछि एट देखुन देला थोलू बोमालाता को हमरो आंध्र प्रदेश रो पपेट्री एटा ठीक अछि नेक्स्ट हला पाभाकोठू ये केरला रो एटा मध्ये ठीक अछि यमपुरी होची बिहार को बिलोंग करछ एटा ठीक अछि किंतु रावणाचार्य हमरो राजस्थान को नै रावणाचार्य होची हमरो को स्टेट रो पपेट्री ना ये होची हमरो स्टेट ओडिसा रो पपेट्री होची रावणाचार्य नेक्स्ट क्वेश्चन हला Togalu Gombeyaata is a form of shadow puppetry that depicts mythological tales of Ramayana and Mahabharata. Now, एटा हमरो यूनिक puppet show of को स्टेट रो एटा ना कर्नाटका स्टेट रो नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एट सारनाथ where the Buddha gave his first sermon, the stone statue has a hand gesture called the Dharma Chakra Mudra. जोठी हमरो सारनाथ रे जोठी हमरो बुद्ध तांगर फर्स्ट sermon देथिले सेठी गोटे स्टोन स्टैच्यू अछि जो स्टैच्यू रो हैंड गेस्चर अछि कोन धर्म चक्र मुद्रा रे अछि तो एटा हमरो करेक्ट आंसर करेक्ट स्टेटमेंट अछि द स्टैच्यूज ऑफ स्टैंडिंग बुद्ध सिग्निफाइज राइजिंग टू टीच आफ्टर रीचिंग निर्वाण एटा मध्ये ठीक अछि The statues of walking Buddha depicts either beginning his journey towards enlightenment of returning after giving sermon. एटा मध्ये ठीक अछि तो एटी तीनटा जाक स्टेटमेंट ठीक अछि आंसर हबो all 3 नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट Dokra art is a various metal casting art that uses the lost wax casting technology. Statement 2 देला the lost wax casting technique has been in used over 4000 years in India and still practiced by artisans in central and eastern India.
स्टेटमेंट 3 देला वन ऑफ द earliest known lost works artifacts is the dancing girl of मोहनजोदारो। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट पचारला। तो ये स्टेटमेंट 1 डोकरा आर्ट इज ए फेरियस मेटल कास्टिंग देला। तो ये फेरियस मेटल कास्टिंग नहीं, ये होची हमरो नॉन फेरियस मेटल कास्टिंग। लॉस्ट वर्क्स कास्टिंग टेक्निक हैज बीन यूज्ड ओवर 4000 इयर्स इन इंडिया। आउ एबे मध्ये एटा प्रचलित अछि, एटा ठीक अछि। वन ऑफ द earliest known works artifact होची डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो। तो एटा भी ठीक अछि, एटा दीटा स्टेटमेंट ठीक अछि, आंसर होची ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी इज एन एंशिएंट टेक्स्ट रिटन बाय। अष्टाध्यायी के लिखिथिले ना अष्टाध्यायी रो लेखक होचंदी पाणिनि। अब ये को सेंचुरी को बिलोंग करंदी, 4th सेंचुरी को बिलोंग करंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सत्तारास ऑफ आसाम। सत्तारास ऑफ आसाम विषय किछि स्टेटमेंट अछि। सत्तारास आर मोनास्टिक इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड एज पार्ट्स ऑफ 16th सेंचुरी न्यू वैष्णवाइट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड बाय वैष्णविस्ट साइंट रिफॉर्मर श्रीमंत शंकरादेव। तो स्टेटमेंट ठीक अछि। दिस Sattaras were established as centers of religious, social and cultural reform। ठीक अछि। During the Ahom region, most of the Sattaras across Assam were destroyed। तो ए स्टेटमेंट एठी भूल अछि। एटा हमरो एठी अहोम रीजन रे एथे एटा डिस्ट्रॉय होई नथिला। आ अहोम डायनेस्टी रो आपे डोनेशन अधिक मिलिथिला, तो एटा डेवलप हेतिला। तो एठी हमरो दीटा स्टेटमेंट ठीक अछि, करेक्ट पचारथिला। तो ओनली 2 को होची करेक्ट, दी ऑप्शन बी हैला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग छठ पूजा। छठ पूजा विषय रे किछटा स्टेटमेंट देला। दिस फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन सदर्न इंडिया। तो छठ पूजा हमरो सदर्न इंडिया रे सेलिब्रेट होनी, एटा सेलिब्रेट होची कोठी ना हमरो नॉर्दर्न इंडिया रे। तो एठी स्टेटमेंटटा भूल अछि, एटा हबो नॉर्थ साइड रे हमरो पालन होची। इट इज डेडिकेटेड टू वर्शिपिंग ऑफ लॉर्ड सन। एठी हमरो सूर्य देव को पूजा करा जाय, एटा ठीक अछि। इट इज सेलिब्रेटेड फ्यू डेज आफ्टर दीपावली। दीपावली रो किछि दिन परे एटा सेलिब्रेट होची, एटा मध्ये ठीक अछि। तो एटा हमरो मुख्यतः हमरो को जो जगह रे पालन होची, बिहार, उत्तर प्रदेश आ सम पार्ट ऑफ नेपाल रे एटा पालन होची। आ एटा 6 दिन दीपावली रो 6 दिन परे एटा पालन करा जाउची छठ पूजा। आ थरे सूर्य देव को पूजा करा जाउची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग केसरिया बुद्ध स्तूप। केसरिया बुद्ध स्तूप विषय रे किछि स्टेटमेंट देला, कोडा करेक्ट पचारछि। केसरिया बुद्ध स्तूप इज लोकेटेड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। एटा ठीक अछि, केसरिया बुद्ध स्तूप हमरो चंपारण डिस्ट्रिक्ट रे अछि। इट इज रिगार्डेड इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बुद्ध स्तूप्स इन द वर्ल्ड। तो एटा स्मॉलेस्ट बुद्ध स्तूप नै, एटा हबो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्ध स्तूप ऑफ द वर्ल्ड। The Archaeological Survey of India has declared it is a protected monument of national importance। How many of the above statement are correct पचाए। तो एटा दीटा स्टेटमेंट एटा ठीक अछि, गोटे भूल होला, आंसर हबो ओनली 2। नेक्स्ट हला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गांधार स्टाइल ऑफ आर्ट। गांधार स्टाइल ऑफ आर्ट विषय हमर किछि स्टेटमेंट अछि, हमहु खोजबार अछि करेक्ट कोडा। The Gandhara school drew upon the anthropomorphic traditions of Roman religion and distressed Buddha in the garments of resolving those seen in the Roman imperial statues। एटा ठीक अछि। This style of art was closely associated in Hinayan Buddhism। तो एटा Hinayan Buddhism को बिलोंग करनी, एटा Mahayana Buddhism को बिलोंग करछि। बामियान बुद्ध स्टैच्यू इज द एग्जांपल ऑफ गांधार स्टाइल ऑफ आर्ट। तो एटा भी ठीक अछि। तो एटी दीटा स्टेटमेंट ठीक अछि, ओनली 2 होछि आर आंसर। नेक्स्ट हला मेघदूत इज द लिरिक पोएम कंपोज्ड बाय। मेघदूत किए कंपोज करथिले ना, मेघदूत को हमरो कालिदास कंपोज करथिले, जे कि बिलोंग करछथि को सेंचुरी रे, 4th सेंचुरी के बिलोंग करछथि, गुप्त पीरियड को बिलोंग करछथि। नेक्स्ट हला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वीर बाल दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू पे होमेज टू द करेज ऑफ द साहिबजादेस।
साहिबजादेस वेर द फोर सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह द लास्ट सिख गुरु। तो एटा कोटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पचारला। तो आमर वीर बाल दिवस आम सेलिब्रेट एवरी ईयर केबे करछन्ती फॉर टू पे होमेज टू द करेज ऑफ द साहिबजादास। ए स्टेटमेंट आइठी ठीक अछि। साहिबजादा माने किए ना फोर सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह द लास्ट सिख गुरु। तो एटा भी ठीक अछि। एटा दुटा जाक स्टेटमेंट ठीक अछि। से हमक इनकरेक्ट पचारथिला। तो नेदर वन नॉर टू इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement regarding UNESCO intangible cultural heritage list। UNESCO रो intangible cultural list ऊपर किछि स्टेटमेंट देला। स्टेटमेंट देला हमु पचला करेक्ट स्टेटमेंट कोटा। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 देला intangible culture heritage ascribes importance to the wealth of knowledge and skill that is transmitted through form of generation to the next। एटा ठीक अछि। The convention for the safeguard of the intangible cultural heritage was adopted by the General Conference of UNESCO for preserving intangible heritage form across the globe। एटा मध्ये ठीक अछि। ऑप्शन 3 देला the list officially recognize the standard of excellence of executive। तो एटा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हेइनी। तो एटा भूल अछि। ऑप्शन 1 और 2 दिला करेक्ट अछि। तो ओनली 2 हबो एठी करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थिला हमरो आर्ट एंड कल्चर रो 35 टा क्वेश्चन रो डिस्कशन। पुनी मॉक टेस्ट सीरीज रे मु मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रो 50 टा क्वेश्चन नै के आसीबी। नेक्स्ट वीडियो रे आमे स्टार्ट माने आमे पढिबा मॉक टेस्ट नंबर 3 मॉडर्न इंडिया इन हिस्ट्री। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विथ गोपाल।